नमस्कार दोस्तों। क्या आपने करियर ब्रेक लिया है बच्चों की वजह से, हेल्थ रीजन की वजह से या कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से? देन दिस वीडियो इज फॉर यू। सबसे पहले मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। डू सब्सक्राइब। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपने करियर ब्रेक लिया है तो आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं टू गेट बैक टू योर करियर मैप रोड। और अगर आप घर से भी काम करना चाहते हो तो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज एंड हाउ यू कैन स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस, फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज या पार्ट टाइम। तो सबसे पहला प्लान करना है प्लान। सबसे पहले एक छोटा सा प्लान तैयार करें जिसमें कि आप मेंशन करें कि आप डेली कितना टाइम डिवोट कर सकते हो। सेकेंड थिंग, आप किस में काम करना चाहते हो। थर्ड थिंग, आपकी क्या क्या स्किल है उसको लिस्ट डाउन कर लो। और फोर्थ थिंग, कि आपको जो जॉब्स अपॉर्चुनिटी अवेल हो रही हैं तो उसमें क्या एक्स्ट्रा स्किल्स की रिक्वायरमेंट है जो आपके पास अभी नहीं है। सो इन सबको लिस्ट डाउन कर लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इफ़ यू हैड टेकन दिस पॉज टू टेक इट एज अ पॉज ओनली। इसको स्टॉप मत समझिए। और करियर ब्रेक लेना कोई वीकनेस नहीं है। मैनी पीपल डू इट एंड स्पेशली वुमेन. There are lots of women who keep on taking break, whatever the reason may be, because of the family reason, children reason, or any other reasons. And take this an opportunity to build yourself as a new version and keep evolving. So let's get started with the step one. पहले अगर आपने अपना करियर ब्रेक अभी स्टार्ट किया है या आप करियर ब्रेक से वापस आना चाह रहे हो तो देयर इज सबसे पहला ऑप्शन होगा आपके लिए लर्न फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम या फ्रीलांसिंग के लिए सबसे पहले यू हैव टू अपस्किल योरसेल्फ। और अपस्किल के लिए आप क्या कर सकते हैं? अपस्किल के लिए आप बहुत ही ईजी और सिंपल कोर्सेज आप लर्न फ्रॉम होम के ऑप्शंस में ही कर सकते हैं। तो सबसे पहला है यू कैन ऑप्ट फ्रॉम कोर्सेरा और उडीमी में, जिसमें बहुत सारी स्किल्स के लिए फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप वो कर सकते हैं। Second is Senta. Senta is specifically for teachers. There are a lot of free courses, webinars available. You can go for that. And अगर आपको लगता है specifically आपके लिए कुछ useful होगा, so you can also have a pay. आप पे करके भी आप कर सकते हैं उस कोर्स को. Then third one is Khan Academy for specifically for mathematics and sciences. And then YouTube, a learning heaven, जिसमें आपको फ्री में बहुत कुछ अवेलेबल रहेगा और स्पेसिफिक स्किल्स जो आपके काम आ सकती हैं, जो आपको सीखनी चाहिए. So are Excel, Canva, Google, and you can also learn teaching and training skills, how to handle social media platforms, content, web designing, and also if you have science, computer science background or you're from computers, then you can go for coding and web designing. So in courses को करने से once you are doing your upskilling, even if you are not from this background, you can do this and get more of opportunities. Second thing, if you have taken a break and you're thinking, so you can keep on doing some courses so that the learning never stops और आप अपना upskilling भी कर सकते हैं. rather than career break को आप अपना upskilling और capacity growth की तरह आप use कर सकते हैं. Now I will share with you what you can choose for your work from home options, freelancing ideas. Start small, go slow, and then make it big. तो सबसे पहला ऑप्शन है फ्रीलांस राइटर्स का. Lot of companies and even with the AI coming in, lot of AI platforms are hiring for freelance writers, freelance content proofreading. आप publications के साथ as a proofreader work कर सकते हो. And you can also choose your time with lots you are comfortable और आप कितना time दे सकते हो. These are the options for freelancing. And also you can provide as the solutions if you're for mathematics and sciences backgrounds, from physics, chemistry, bio. So there are a lot of freelancing options available. You can also work as a content writer where you can provide the content which can be subject specific also. And for people from English backgrounds, there are lots and lots of freelancing works. Then you can work as a virtual assistant. Virtual assistant में basically what you do is आप email, calendars और basically admin का work, so you can work as that. You can handle all those things. आप एक छोटे से बिजनेस के लिए सोशल मीडिया मैनेजर का भी वर्क कर सकते हो. यू कैन हैंडल देयर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. देन अ वेरी best one option if you're from teaching backgrounds and you have experience with online and offline as well, so you can go for tutoring options, which में आप जिसमें कुछ टाइम स्लॉट अपना चूज कर सकते हो पर डे और पर वीक के हिसाब से. एंड देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स विच आर अवेलेबल. इवन यू कैन स्टार्ट योर ओन. सो यू कैन स्टार्ट एंड शेयर एंड क्रिएट योर ओन नेटवर्क. तो उसमें टाइम लगेगा. सो अदरवाइज यू कैन स्टार्ट ऑन सम प्लेटफॉर्म विच आर ऑलरेडी वर्किंग. So you can share over there your resume, and then once you get shortlisted and you have also
the knowledge how to operate Google, Microsoft. So you can start working as that. Otherwise, you can do upskilling and work as a home, tutor, online tutor. And one-on-one sessions are also available. One-to-many are also available. So these are so many options which are available. Then customer support services. There are a lot of work from home options. You can work over there, and you can work for sell on Amazon, Meesho, Instagram. You can work and sell that. Then also you can start as a YouTuber on Instagram, and once you start getting monetized, you can also sell your own products, and you can get your shops linked to that platforms, and then you can start working. If you're from computers background, you can use Canva and work as a graphic designer. You can also work as a web designer. You can also work as a data operator and manage all the logistic sheets, and for that you have to have mastery in Excel and advanced Excel. So you can work for all these options available. Once you start exploring it, there are a lot of options, and in the description also I will share the link of websites where you can upload your resume and you can start searching it out. And also I will share the links of the websites where the free courses are available for in the description. And the websites on which you can search are Upwork, Freelancer, Fiverr, LinkedIn, Naukri.com, Indeed, and there are all these sites I'll be mentioning in my description. You can go and check on that. Now, how you can work on this? Start small and be consistent. किसी भी नई चीज को स्टार्ट करने के लिए या वापस अपना करियर को ओपन करने के लिए, then start on that roadmap again or start the earning opportunities and be financially independent. What you need to do actually is रोज 1-2 घंटे डिवोट करने हैं, but you have to be very very consistent. Make sure you're consistent and don't take a even off on Sunday as well. So रोज आप डेली 1-2 घंटे डिवोट करें, and for sure within 2 to 3 months you'll see the result, because keep knocking on the door, because the door will be opening, but then you have to keep knocking on it. And बिल्कुल ये 100% possible है that you can get back to your career after the career break. Just take it as a pause and not as a stop. And for any more details and information, you can DM me on Insta and you can email me also. एंड इफ़ यू आपको रेज्यूमे बनाना हो या आपको स्पेसिफिकली अपनी सब्जेक्ट के लिए गाइडेंस चाहिए या आपके किसी भी हैंडल के लिए आपको और गाइडेंस चाहिए, देन डू शेयर एंड यू कैन ऑल्सो राइट इन कमेंट्स. आई विल गेट बैक टू यू.